Hey, hi friends. वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर स्टॉक। आज हम कोटक बैंक के बारे में डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं हमने 5 मेजर स्टॉक्स को एनालाइज कर लिया है। इफ यू हैव नॉट चेक्ड आउट देयर वीडियोस, प्लीज डू चेक इट आउट on my channel Dr. Stock. So without getting further delay, let's start the discussion. So like always, we will follow the two-way method. टू अप्रोचेज हम फॉलो करेंगे। पहले हम इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और उससे एक रेंज निकालेंगे, एंड देन वी विल डू अ फंडामेंटल एनालिसिस और उससे एक रेंज निकालेंगे, एंड देन व्हाट वी विल डू इज वी विल ट्राई टू आइडेंटिफाई इफ वी कैन कम अप विद अ कॉमन रेंज जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो विदाउट गेटिंग डिले, लेट्स स्टार्ट। ये हमारा कोटक महिंद्रा बैंक का ग्राफ है पिछले 7-8 सालों का, जो मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे। और आप देख सकते हैं मैंने मैक्सिमम और मिनिमम लाइन ड्रॉ की है इन द लाइट ब्लू कलर that you can see, and then I was trying to analyze based on the different support and resistance line जो मैंने ग्रीन में ड्रॉ की है, that how the stock is moving. The one that you see in the yellow orange line, this is the average line across which the stock oscillates, and then it remains in their upper bound or lower bound depending at what time we are investing. आप देखेंगे कि 2018 से पहले तक ये स्टॉक अप्रोक्सीमेटली अपने लोअर बाउंड में मूव कर रहा था, एंड ऑल ऑफ अ सडन इट जंप बैक टू द अपर बाउंड। एंड सबसे बड़ा उसका रीजन ये है कि निफ्टी हैज स्टार्टेड इंक्लूडिंग इट इनटू इट्स टॉप 50 स्टॉक्स। सो दैट्स वन ऑफ द रीजन जो एकदम से ये मूव करा अपने अपर बाउंड में। बट आप देखेंगे कि अभी बिकॉज ऑफ कोविड-19 ये नीचे आ गया है अपनी normal average line से, which is a good time to consider to invest in this stock. So I was trying to understand कि यार इसका annual return जो rate होता है वो approximately 34% के आसपास है, which is very very healthy on an average side if I look at. And if you see this stock how it behaves very weirdly, I would say, because क्या है कि आफ्टर 2008 हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो राइज एंड फॉल है उसका जो स्लोप है दैट इज नॉट वेरी कंसिस्टेंट। व्हाट आई मीन इज दैट उसका जो राइज होने का जो टाइम फ्रेम है और जो फॉल होने का टाइम फ्रेम है वो थोड़ा इक्वल नहीं है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि स्टीप राइज हुआ एंड देन स्टार्टेड फॉलिंग। सो इसका भी सबसे बड़ा रीजन वही है जो हमने इन्फोसिस में देखा था, एंड आई विल टॉक अबाउट इट व्हेन वी विल टॉक ऑन द फंडामेंटल एनालिसिस। अभी आप इसको देखेंगे कि रिसेंटली हाउ इट हैज स्टार्टेड बिहेविंग इज, आप रिसेंट डे का कैंडल देखेंगे तो इट इज गोइंग अप एंड डाउन। सो इट इज वेरी हाई वॉलेटाइल स्टॉक। ये अपना काफी लोअर सपोर्ट लाइन टच करते हैं, देन हायर सपोर्ट लाइन टच करते हैं, इट मूव्स बिटवीन दीज रेंजेस वेरी 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 फास्ट। सो this is the general trend the stock moves in. Based on this, I feel that this is a very high volatile stock, and this should come down to its lower minima range if you look at, because ये अपने एक या दो सपोर्ट लाइन को बहुत easily ब्रेक कर देता है in one day और 2 day स्पैन। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि एक रेड कैंडल ने इसने 2 दिन का सपोर्ट लाइन एक बारी में ब्रेक किया। जनरली ऐसा होता है कि ऐसे स्टॉक्स के अंदर आपको थोड़ा मार्जिन लेके चलना पड़ता है व्हेनेवर यू ट्राइंग टू इन्वेस्ट। इफ यू आस्क मी, इट इज एक्चुअली एट द राइट टाइम नाउ टू इन्वेस्ट बिकॉज अपने एवरेज लाइन के नीचे चल रहे हैं, एंड it is also touching the one of the support line. But again, considering the kind of variability that it is showing, I would say you still need to have some margin so that you can get the maximum returns out of it. इसको अगर हम consider करते हैं कि how it is behaving and how the banking sector overall is behaving, and it's falling because of the COVID-19, and every person, every investor is trying to speculate that most of the investments that bank has given, or the more of the loans that banks have given, those are kind of stressed loans right now. उसको रिकवरी करने में थोड़ा प्रॉब्लम तो होगा ही बैंकिंग सेक्टर में, जिसकी वजह से these stocks are right now not in par to invest, I would say, at their optimum range. इसी वजह से I would say कि let's keep some buffer.
while investing in this stock, and I feel that according to the technical range, because अगर हम इसके मिनिमल लाइन पे इन्वेस्ट करते हैं, सो हमने देखा है कि कभी भी मिनिमल लाइन से ऊपर नहीं गया है. सो आई फील लुकिंग एट द वॉलेटिलिटी ऑफ अ स्टॉक, आई फील अगर आप इस रेंज में इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पे इसके दो सपोर्ट लाइन के भी ऊपर है ये, लेकिन ये दो सपोर्ट लाइन एक दिन में भी ब्रेक कर चुका है इन द पास्ट एज वी हैव सीन. सो आई फील कि ये दैट विल बी द राइट टाइम टू इन्वेस्ट. सो एज सून एज it touches its lower minimal line and 1100 से लेके और 1033 तक, सो 1180 से लेके 1025 के बीच में अगर कभी भी इसी रेंज में रहता है तो आई फील इट्स अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट इनटू कोटक महिंद्रा बैंक एज पर द टेक्निकल एनालिसिस. आप ये देखेंगे कि इसने जब भी पेंडेमिक हुआ, सो इट हैज मूव फ्रॉम मैक्सिमा टू मिनिमा. So generally, if you look at the analyst, what they say कि it has tested time in the times of coronavirus. I do not agree. This is a very steep fall if you consider Kotak Mahindra Bank. So I still feel that this is a very volatile stock to consider, and that's why I feel कि आपको इसको टेक्निकल रेंज आपको इसको नीचे रखना पड़ेगा टू अकाउंट की इसकी वॉलेटिलिटी ज़्यादा है स्टॉक की. सो टेक्निकल रेंज से हमारी जो रेंज निकल कर आई है वो है 1200 से 1025 के बीच में. सो बेसिकली अप्रॉक्सीमेटली 100-150 रुपये का मैंने मार्जिन लगाया है, लेकिन इट शुड बी लोअर देन एटलीस्ट 1180 या 1200 के आसपास. सो ये तो है हमारा टेक्निकल एनालिसिस से रेंज. जब एक बार क्विकली इसका डिस्काउंटेड कैश फ्लो देख लेते हैं फंडामेंटल एनालिसिस से. सो मैंने क्या किया, जैसे मैं करता हूँ, कोटक महिंद्रा अगेन इज अ वेरी पॉपुलर बैंक इन इंडिया, और उसकी वजह से अभी इसके जो डिपॉजिट्स हैं वो काफ़ी इंक्रीज हुए हैं इन द रिसेंट ईयर्स, विच इज़ अ गुड थिंग फॉर अ बैंक बिकॉज उनके अंदर लिक्विडिटी बना रहता है. द मोर कैश दे हैव, द मोर लोन्स दे कैन गिव एंड देन दे कैन अर्न मोर फ्रॉम दैट. सो अभी रिसेंटली अगर आप 2019-2020 का जो स्टेटमेंट है अगर आप वो देखेंगे तो इनका जो डिपॉजिट कैश फ्लो है वो काफ़ी बड़ा है. I was looking at कि how their investment has increased. So आप देखेंगे increase in deposits जो है और increase in advances जो है वो कम हो गया है, और आपका जो deposits है वो kind of सेम रहे हैं, मतलब एवरी ईयर एटलीस्ट फ्रॉम द पास्ट 2 years. बट आप अगर उससे पहले का कंपेयर करेंगे जो आपके डिपॉजिट्स थे देवर प्रीटी लो. सो 195 से 356. सो दिस हैज अ सब्सटेंशियल जंप दैट वी हैव सीन फ्रॉम 2017 टू 2018 जब से उसको निफ्टी टॉप 50 स्टॉक्स में डाला है. तो दिस इज अ पॉजिटिव थिंग कि उसके जो डिपॉजिट्स हैं वो काइंड ऑफ मेंटेन्ड है या फिर इंक्रीजिंग हो रहे हैं एवरी ईयर ऑन ईयर. So which is a good thing, and उनके advances भी they are trying to control it, which is also a positive thing in a banking sector. So मैंने क्या किया है कि again looking at the annual reports, मैंने इसका discounted cash flow statement से इसके स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू निकाली है based on again the same calculation that I do every year, that they take net cash from the operating activities and then the capital expenditure on the fixed assets and then free cash flow, and then how the rate has been calculated I explained in the case of when we discussed about the HDFC Bank, that how do we calculate the growth rate in the case of bank, and you can go through that video if you have not. And then taking out the debt and the cash that that Kotak Mahindra has, and what is the share capital that they have. So उससे intrinsic value stock की 785 आती है. So if you look at the upper and lower bond, I would say वो 700 से 850 के आसपास आता है. So अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस से देखेंगे तो दिस इज अ रेंज ऑफ स्टॉक. सो जनरली आप देखेंगे कि ये हमारे साथ आई थिंक हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी हुआ था कि जब हमारे पास दो रेंजेस कन्वर्ज नहीं करती हैं एक कॉमन पॉइंट पे, विच मेक्स इट बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि यार कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए. नाउ वी हैव सीन कि यार ये जो कोटक महिंद्रा है वो कभी भी अपने मिनिमम लाइन से नीचे नहीं आया है. सो आई फील दैट दिस इज द बेस्ट बिट दैट वी हैव राइट नाउ टू इन्वेस्ट एज सून एज इट कम्स टू अपने मिनिमम लाइन पे, and that's why I have highlighted that in the technical range would be a right range to invest.
So I feel this is an investable range. So whenever it is coming down अपने 1025 से 1200 के बीच में, that time you can definitely go ahead and buy it, and then you can think of selling it as it reaches to its maximum line. So that's what my analysis says, that it is still on a higher side a little bit. So I would say that you should wait, looking at the volatility and how this stock has behaved in the past. Let it come down to its minimal line in this red region, and I would say you can plan to invest in Kotak Mahindra. Okay, so this is one thing that I wanted to highlight, and second thing that I want to talk about is कि Kotak Mahindra Bank को 2017 में include किया था with a weightage of 3.2% in the Nifty 50 stocks, जो कि आपका डाउ जोन्स को फॉलो करता है, डाउ जोन्स प्रिंसिपल को फॉलो करता है. तो आपका 3.2% में आपको इंक्लूड किया था, एंड इट हैज बीन कॉन्स्टेंटली बीइंग रिवाइज्ड टू अपसाइड. सो 4.49% हुआ है अभी, और 4.85% है. सो दिस इज प्रीटी डिसेंट. अगर आप देखेंगे इन द फाइनेंशियल सर्विसेज, जो आपको निफ्टी 50 में कॉन्फिडेंस है एज कम्पेयर टू इफ यू लुक एट अदर बैंकिंग सेक्टर लाइक SBI और बजाज फाइनेंस और अदर्स. सो उसके कंपैरिजन में इसका काफ़ी अच्छा वेटेज दिया हुआ है. दैट्स व्हाई आई फील कि दिस इज अ गुड प्लेस टू इन्वेस्ट. आप इसके बारे में काफ़ी पढ़ सकते हैं. मैंने पूरी एनुअल रिपोर्ट पढ़ी है ना, बिकॉज दिस वीडियो शॉर्ट, आई विल नॉट टॉक अबाउट इट, बट यू कैन डेफिनेटली गो अहेड एंड रीड अबाउट इट. एक थिंग जो मुझे हमेशा बॉदर करती है वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न. एंड अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे जो प्रमोटर्स के पास शेयर होल्डिंग वो 29% है, और वैसे पब्लिक के पास 71% है. एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन वाई द स्टॉक हैज सो मच वॉलेटिलिटी. क्योंकि क्या होता है कि जब भी कोई न्यूज़ आती है या कोई इवेंट होता है, तो उस टाइम पे पूरी मार्केट काइंड ऑफ टेंड्स टू रिएक्ट सिमिलरली इन द सेम टोन. और उसकी वजह से प्रॉब्लम ये होता है कि अगर मार्केट एक जैसा रिस्पॉन्ड करी तो वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा आता है, तो स्विंग काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है ऐसे स्टॉक्स में. सो दीज काइंड ऑफ स्टॉक्स आर गुड फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग. अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि कल मार्केट गिरेगी या फिर कल मार्केट पॉजिटिव पे ओपन होगी, तो यू कैन थिंक ऑफ इन्वेस्टिंग इन दीज काइंड ऑफ स्टॉक्स वेयर यू बाय एंड सेल ऑन द सेम डे. बट अगर आपको इसको लॉन्ग टर्म में रखना है, आई वुड स्टिल से कि लेट्स वेट फॉर इट सम मोर टाइम, जब तक कि अपने लोअर या तो इस 1200 वाली जो सपोर्ट लाइन है उसको टच करता है, या अपने मिनिमम लाइन को टच करता है विद द रेंज ऑफ 1025 से 1200 के बीच में. सो दैट इज द रेंज आई फील इज इन्वेस्टेबल रेंज इन दिस स्टॉक. सो ये मैंने आपको अच्छी चीज़ बताई कि निफ्टी के अंदर इन्होंने हायर परसेंटेज एलोकेट कर दिया है ओवर द इयर्स, एंड इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न थोड़ा सा खराब है, विच जनरली बॉदर्स मी, बिकॉज अगर ऐसा होता है तो दैट मीन्स प्रमोटर्स डजंट हैव रियली हाई कॉन्फिडेंस, और इट कुड बी दैट दे वांट मोर liquidity by selling their own share to public. So this is also one thing that I feel needs to be improved. If they can come to 50% of the shareholding, 51%, I think that really makes a really good business to invest in. Alright, so हमारे कोटक महिंद्रा की रेंज निकल कर आई है from 1025 to 1200. Now, one thing that I always talk about at the end is on the Sentinel. So Sentinel is an alert platform free of cost from Zerodha. So अगर आपको हर एक स्टॉक को ट्रैक करना इतना ईजी नहीं होता, so what I would expect is कि आप Sentinel इंस्टॉल कीजिए, लॉग इन कीजिए, उस पर अपना अकाउंट बनाइए, और वहाँ पे कोटक महिंद्रा का एक 1200 रुपये का अलर्ट सेट कर दीजिए. जब भी आपका ये स्टॉक 1200 क्रॉस करेगा इन द नेक्स्ट 1 or 2 months, देन यू कैन गो अहेड एंड इन्वेस्ट इन द स्टॉक. सो सेंटिनल एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जो आपको अलर्ट्स देता है, सिंपल अलर्ट्स दैट यू कैन कॉन्फ़िगर, या आपको फ़ोन पे भी बता देता है. सो आई फील दिस इज़ प्रीटी गुड इफ़ यू कंसिडर दिस काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म which really helps to keep a track on the market and on the stocks that we are looking at. I hope you like my video. If you like it, please click on subscribe. Please share your comments and thoughts regarding my analysis so that we can improve further. Thank you for watching.